Good morning everyone. Today we will continue our same chapter, that is the rural development. Before we will start today's session, just recap of this chapter whatever we had done in the previous lectures. Now what is the rural development and what is the need of the rural development already we had seen. So rural development is quite a comprehensive terms, but it essentially means a plan of action for the development of rural area which are lagging the behind in the social economic development. Fine. So these are the what you mean by the rural development. And what are the key issues of the rural development? We had seen already: land reforms, development of the human resources, development of the productive resources, and each locality infrastructure facility, etc. And next topic, whatever we had done before, maybe the previously 1 or 2 lecture before, credit in the market in the rural area. What do you mean by the credit? It means just the udhar, credit facilities in the loan, advance, and credit facility given by the bank or any other social groups. So importance of the rural credit facility in the rural development we have already seen. That is a very important criteria, because of with the help of this credit, the rural people develop themselves or their business also. Sources of the rural credit in India. So there are many sources of the rural development after the independent. Before the independent, money lenders are there. We can say zamindari system is there. So it is very difficult. But after the independence, some banking facilities provided by the government in the rural area, mainly we can say NABARD, N-A-B-A-R-D. NABARD, that is the National Bank for Agricultural and Rural Development. It is the first motive and the objective of this bank is the provide the loans and advance or credit facility to the rural development or rural people for the agriculture and other activities. And the green, after the green revolution, that is fast change in the pattern of the farming also, so they need some credit facility. So some banks are provided them to credit facility, just like regional rural banks, that is RRBS. Many banks are, many multinational agencies are also part of this credit system. Now the rural banking system a critical evaluation. जब rural banking की बात होती है तो critical analysis भी हुआ है, because of the banking system is a depend on the some, we can say, some commercial bank are established for the profit making organization only, fine. But when we are talking about the rural development or rural credit facility, we side by side हमें commercial bank का ये profit maximization और profit motive objective को side में रखना पड़ता है, because this is a social economic activity. So some group ups come in the picture also, that is called self-help group, that is called SHS group. It is the micro credit provider, है ना. कुछ लोग मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और उस कंट्रीब्यूशन में ऐसी नीडी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं. सो इस तरह के बिकॉज ऑफ दिस द ड्रॉबैक एंड वी कैन से critical evaluation of the commercial bank, some this type of group comes in the picture also. And after that, agriculture market system. So some obstacles that are hidden in the mechanism of the agriculture marketing also. So today we will start our topic is the diversification into the productive activity. Why the people are need to divert their activity to farming to the other activity. जैसे फार्मिंग में हमने देखा सम मेजर्स ऑफ द इनिशिएटिव गवर्नमेंट इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया बिकॉज ऑफ द दे नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर फैसिलिटी. सो रेगुलेशंस ऑफ मार्केट आर इम्प्रूव्ड, प्रोविजन फॉर द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. That 4 steps taken by the government to improve the rural development or marketing structure, improve the we can say agriculture sector. But still already we had seen, जब मैंने एक example दिया था, if the 10 people in the family are engaged in the one farm area only, but at that farm area only 5 people there required, है ना. केवल 5 लोगों की जरूरत है, 5 एडिशनल उसमें बैठे हुए हैं. It means they are not giving the productivity or economic contribution for the for country or for themselves also.
सो वो 5 लोगों के लिए दूसरा काम जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशंस into the productive activities. So agriculture diversification, it is the meaning and the significance of the agriculture diversification is agriculture diversification includes 2 aspects. First, one relates the change to the cropping pattern, या तो आप अपना cropping pattern change कर दो, और second the order relate the shift to workforce from the agriculture to the another, या तो आपका वर्कफोर्स ही जैसे 5 लोगों को यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया है दूसरे एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गए. सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वर्कफोर्स. और फर्स्ट इज द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, या वो एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न में आप काम करो, या आप कैसे काम करोगे, जस्ट द चेंज इन द वर्कफोर्स फ्रॉम द वन फार्मिंग टू द अनदर एक्टिविटीज. व्हाई द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वी रिक्वायर्ड द एसेंशियल ऑफ द सस्टेनेबल लाइवलीहुड. जैसे एग्जाम्पल दिया, 10 लोग अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो सेम प्रोडक्शन है, आउटपुट सेम आएगा. तो सेलिंग प्रोडक्शन के बाद आफ्टर द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट दे हैविंग द सम लिमिटेड अमाउंट एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव और लाइवलीहुड फॉर दैट 10 people also. So that is the essential or requirement of the for livelihood, that people are diversified. There some people who are the actual unemployment but दे आर जस्ट लाइक अ एम्प्लॉय, जस्ट वो दिखते हैं कि वो काम कर रहे हैं बट उनका काम का आउटपुट नहीं आता है. सो इसके लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. नाउ रोल ऑफ द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन द प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन. द डायनेमिक सब सेक्टर दैट इज द परमिटेडली हेल्थ ग्रोथ एंड द अदर सेक्टर्स आर द सबसिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोपोर्शन. सो इनमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं या प्रोडक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिसमें फार्मर्स इजीली डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं. फर्स्ट इज द एनिमल हस्बेंड्री. इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूज द मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम, कैटल, goats, fowl or the widely held species. Milk, meat, egg, wool and other byproducts are emerging and important productivity sectors of the diversification. अगर सपोज फार्मिंग से आपको कहीं और डाइवर्ट होना है तो दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री इज द बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट आइडिया, बिकॉज फार्मिंग के साथ साथ उनके घर पे ऑलरेडी ये सारे एनिमल्स अवेलेबल है. सो उनका मिल्क प्रोडक्ट, एग और इन सबको सेलिंग करके वो इस काम में इजीली डाइवर्सिफाई हो सकते हैं विदाउट एनी कैपिटल और विदाउट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट. Livestock productions provides the increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without the disturbing other food productive activity. Today, livestock sector alone provides the alternate livelihood options to over the 70 million small and the marginal farmers included in the landless laborers. A significant number of the women also find the employment in the livestock sector. The pie chart shown the distributions of the livestock in the India. In this book, one pie chart is given to. I am just giving you the figure of this pie chart. So when we can say poultry farm, that is the 1% peoples are there. Others are many number of person is there, and 16% given to the goats, है ना, बकरियों के काम के लिए यूज हो रहे हैं. एंड कैटल एंड द बफेलोज एट द 24% पीपल आर एंगेज इन द कैटल एंड बफेलो बिजनेस ऑल्सो. नाउ द मेजर्स टू इंक्रीज द लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. व्हाट आर द मेजर्स टू वी कैन से कि हमारा लाइवस्टॉक के तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है. इंडिया हैड अबाउट द 300 million cattle, include 108 million buffaloes in 2012. Though in terms of numbers our livestock population is quite impressive, but the productivity is quite low as compared to the other countries. It is required to improve the technology and promotions of goods breed of animals and to enhance the productivity. अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है बट उसका मार्केटिंग अच्छे से नहीं है, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना आपको अच्छे से नहीं आता है, जैसे आप लोग BS में पढ़ते हो, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा, 4P ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रक्चर. सो अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो वो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं.
और दैट इज कल आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है. Improve the care and the credit facility to small and the marginal farmers and landless laborers would enhance the sustainable livelihood options through the livestock production. परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिया डेयरी सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है वो हम देख लेते हैं. मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज द इंक्रीज्ड बाय मोर देन 8 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2014. डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क का प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ गया? 8 टाइम्स बढ़ गया. 1951 से 2014 का डेटा हम कंपेयर किया है. सो 8 टाइम्स, बिकॉज और होना भी चाहिए बिकॉज पॉपुलेशन इज अगेन इंक्रीज डे बाय डे. This can be attributed mainly to the successful implementation of the Operation Flood. That is the one tag mark, that is the Operation Flood is the one we can say योजना एंड सेमिनार की जिसमें आप लोगों ने इस पे फोकस किया है. Operation Flood is a system whereby all the farmers can pool their milk produced according to the different grading based on quality. जैसे आता है ना, if you are purchasing the Amul dairy पर दूध, so 22 रुपीज़ का पॉलीथीन बैग एक बैग आता है 500 ml का. देन 24 का आता है, 27 का आता है, 28 का आता है एंड 30 का आता है. तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे जैसे क्वालिटी बेस्ड ऑन द क्वालिटी दे आर डिफरेंशिएट दैट प्रोडक्ट ऑल्सो. And the same is proceed and marched to urban centers through the cooperative society. Just Gujarat state is held a success story of the efficient implementation of milk cooperative which is being the emulate the many states. गुजरात में बहुत अच्छा है, जैसे अमूल है, दूधधारा है, और इन अवर state also दूधधारा is also there, Amul is also there, Mother Dairy is also there. So that is the successful story of the milk product. And next is the fishing. We can say fishers, and fishing is the next activity. We can say that is the second option of the diversification of the farmers' livelihood. The fishing community regards the water body of the mother or provider. The water bodies of the consist of sea, oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams, and etc. are therefore an integral and the life-giving the sources for the fishing community. In India, after the progressive increase in the budgetary allocations and the introduction of new technology in fishing and acquired the development of the fishers has come the long way. Presently, fish production from inland sources contribution about 64% to the total value of fish production, and the balance 36% comes from the marine sector, just like the sea and ocean. Even though women are not involved in active fishing, about the 60% of the workforce in the export marketing and the 40% in internal marketing are women. Today, total fishing productions accounts for 0.8% of the total GDP. GDP का 0.8% contribution fishing से आ रहा है. In India, West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu are the major fish producing states. A large share of the fish workers' families are poor. Unemployment, low per capita earning, absence the mobility of the labor to other sectors, and high rate of the illiteracy and inadequacy, some of the major problem of the fishing community face today. That is the reason they are the still poor. There is a need to increase the credit facility through the cooperative, just like and SHG's group, self-help groups for the fisher women to meet the working capital requirement for the marketing purpose. Problems related to over the fishing and the pollutions need to the regulate and the controlled.
Welfare programs for the fishing community have to be reoriented in a manner which can be provide the long-term gains and the sustainable livelihood system. So this is all about today. Today we have already seen the animal husbandry and the fishing. What are the main sources? अगर हमें फार्मिंग के अलावा और कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है तो विच आर द मेन सोर्सेज. तो टुडे वी जस्ट डिस्कस टू सोर्सेज, दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री एंड द फिशिंग सिस्टम. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज रूरल एरिया में ये चीज़ ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और लोग इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं बिकॉज उनका वर्क लाइन होता है इसमें. तो दैट इज़ अ वेरी ईजी एंड वेरी cheap source to diversify themselves to farming to this type of activity. That's all for today. Thank you. Have a nice day.